equal to 1 to n g of xi del fi minus f of xi del gi over g of xi minus 1. ठीक हो गए? जी सर। This is equal to supremum of I is equal to 1 to n g of xi del fi minus f of xi del gi over g of xi minus 1. ठीक हो गए? जी सर। मैं इसको मिटाने लगूंगा. Since it is given to us that g of x for all x, ठीक हो गया? इसका मतलब g of xi और g of xi minus 1 वो भी greater or equal to lambda होंगे because for all x है. So this implies total variation of f over g is equal to लेस और इक्वल टू हो जाएगा क्योंकि ये हमारे पास डिनोमिनेटर में आ रहे हैं. सो दैट विल बी चेंज टू लेस और इक्वल टू I is equal to 1 to n summation g of xi del fi plus f of xi to del gi divided by lambda into lambda. ठीक हो गया? ये लेस और इक्वल टू इसलिए बिकॉज g ऑफ x इज ग्रेटर इक्वल टू लैम्डा क्योंकि डिनोमिनेटर में था इसलिए वो लेस और इक्वल टू है. सो दिस इज अगेन लेस और इक्वल टू 1 over lambda square supremum of I is equal to 1 to n plus del g. अरे दोनों के दरमियान माइनस का साइन था जी सर, साइन तो माइनस का था. क्या कह रहे हैं मुझे समझ नहीं आता. सर एफ ऑफ एक्स आई और डेल जी जो है अच्छा ये माइनस 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 ही है. वो बाद में ट्राइंगल इनक्वालिटी लगा देते प्लस में हो जाएगा. ठीक हो गया? यहाँ पर ये माइनस ही है. अचानक आवाज आ गई. Now since both f and g are functions of bounded variations, this means that this f of xi is less or equal to say m1 and g of xi is less or equal to m2, say, because both functions f and it is given to us that both f and g are functions of bounded variations. ठीक हो गया? So this will be again to say less or equal to ये आ जाएगा m2 over lambda square supremum of, so बल्कि उसको हम टोटल वेरिएशन की फॉर्म लेते हैं va to b f plus m1 over lambda square va to b g, and this completes the proof. ठीक हो गया? लिख लिया? जी सर। यस सर। अच्छा, उस्मान आया हुआ? जी सर। सर मीन कि हमने कोई भी यानी कि किसी भी फंक्शन को चाहे इन्वर्स हो हमने। जी जी सर।
आवाज आहिस्ता आ रही है। जी सर, हमने यानी किसी भी फंक्शन की यानी कि वेरिएशन को चेक करना हो तो हम ये दो जो हमने आइडेंटिटीज पढ़ी थी उनको सेटिस्फाई करवा दे तो वो हो जाएगी। यार मुझे आपकी आवाज कोई नहीं आ रही, समझ ही नहीं आ रही। हम अगर कोई यानी किसी को भी यानी कि टोटल वेरिएशन हमने प्रूफ करना हो बाउंड्री वेरिएशन, तो हम जो आइडेंटिटीज हमने पढ़ी हैं यानी एक सम की, डिफरेंस की और प्रोडक्ट की वो सेटिस्फाई करवा दे तो वो हो जाएगी। आपकी किसी टाइम आवाज ऊंची आ जाती है फिर आहिस्ता हो जाती है, मुझे समझ नहीं आ रही। ये कॉल पे पूछ लेना जो भी पूछ रहे हो। जी ठीक है सर, कोई हेलो, आवाज आ रही है? जी सर, आ रही है आवाज। चले यानी हो। ठीक। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो इसी से रिलेटेड रिजल्ट है, वो है ये रिजल्ट। वो हाँ एफ ओवर जी था, यहाँ पर 1/f है, तो ये उसी से मिलता जुलता है। लेट एफ बी यूनियन पार्टीशन ऑफ ए बी, जिसके पॉइंट्स ये हैं। तो हमने टोटल वेरिएशन ऑफ 1/f फाइंड करना है। तो सिमिलरली वहाँ एफ ओवर जी था, तो ये उससे ज़्यादा सिंपल ही है, 1/f है। तो उसी अंदाज में आपने चलना है, डेल्टा 1/f आई 1/f ऑफ एक्स माइनस 1/f ऑफ एक्स आई। एलसीएम ले लें, एलसीएम लेने के बाद आप इन मॉड को सेपरेट कर लें। ठीक हो गया। यहाँ हमें गिवन है कि जी ऑफ एक्स इज ग्रेटर और इक्वल टू लैम्डा। ठीक हो गया। सिमिलरली सो दिस इज लेसर इक्वल टू सिंपल। उसी अंदाज में आपने चलना है जिस अंदाज में आपने एफ ओवर जी को चलना है। यहाँ पर हमारा ये टॉपिक खत्म होता है। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है दैट इज रिमान स्टिलेजेस इंटीग्रल। ठीक हो गया। ये बेसिकली एक और टेक्निक जनरलाइजेशन है, एक तरीके की डॉरबॉक्स इंटीग्रल की। डॉरबॉक्स इंटीग्रल में आप डी एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स करते थे, इसमें आपने विद रिस्पेक्ट टू एन अदर मोनोटोनिकली फंक्शन अल्फा एक्स लेना। मतलब वहां पर आप डी एक्स के लिहाज से करते थे, तो यहाँ डी अल्फा एक्स होगा। तो सिमिलर टेक्निक्स होंगी, इस तरह डॉरबॉक्स में चले थे, इसी तरह हम इसमें भी चलेंगे रिमान स्टिलेजेस के लिए। लेकिन ये हम नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह करेंगे, क्योंकि आज मुझे आप लोगों की आवाज़ कोई नहीं आ रही। ठीक हो गया जी। उस्मान अटेंडेंस ले लेना यार। ओके सर, मैं ले लेता हूँ। ठीक है जी, ओके, अल्लाह हाफिज़। Record.